This is what top MVA sources have been able to tell CNN News 18. We're learning that a group of small regional parties has extended their support to them. This consists mainly of the Jayant Patil faction from Shetkari Kamgar Paksha and Raju Shetty of the Swabhimani Shetkari Sanghatna. Then the number of participants for the INDI meeting is likely to surpass the figure of 26 on the background of parties like the BRS and the VBA trying to align with the smaller parties. This is being seen as a crucial move to arrest the threat of these parties eating into the vote share. Now, to get us more on this, we're crossing over to CNN News 18's Mumbai Bureau Chief, Vinaya Deshpande. Vinaya, over to you. Well, yes, good morning, Aisha. This is an important piece of news that we are getting for our viewers at a time when the India meeting is taking place in Mumbai on the 31st and 1st of September. We are seeing that while on one hand there are differences that are emerging, on the other hand, there is also a consistent effort in order to nip any bid for the opposition unity in order to get their smaller parties together, and that is why we have seen now top sources within the MVA telling CNN News 18 that there is a group of at least 12 to 13 smaller regional parties which have extended support to India and the meeting that is going to take place in Mumbai. Now remember, these smaller parties, some of them are left-leaning parties. Primarily these parties are being led by the Shetkari Kamgar Paksha, which is the Peasants and Workers Party, as well as the Swabhimani Shetkari Sanghatna, a dominant voice for the farmers leaders and the farmers in the state of Maharashtra. At least we know that Raju Shetty at one point was was an MP from the Swabhimani Shetkari Sanghatna. So may it be Jayant Patil of Shekap, which is the Shetkari Kamgar Sanghatna, or Raju Shetty from Swabhimani Shetkari Sanghatna. These are the two important leaders for this loose conglomeration of around 12 to 13 smaller regional parties. This is primarily being seen as an effort to make sure that at least within Maharashtra, may it be the Vanchit Bahujan Aghadi, may it be the BRS, which is making stronger inroads after coming from Telangana, their efforts in order to align with smaller parties should be arrested to make sure that there is no further vote division. So this is what MVA sources tell CNN News 18 at present. Primarily, the top focus as of now will be to make sure that at least in Maharashtra, the smaller regional parties are brought on a side which is against the BJP, and there is a consolidation of voices so that there is no fragmentation of vote bank further, because right now clearly may it be the BRS, may it be the VBA, or may it be the AIMIM, this is being seen by the MVA and in a larger picture by India as the parties which will cut into the vote share and will further end up benefiting the BJP. So this is being seen as an effort to nip in the bud any processes to help these regional parties bring along the smaller regional forces with them, and that is why this letter of support by 12 to 13 smaller regional parties, primarily led by Raju Shetty and Jayant Patil, is being seen as an important move. Back to you. Yeah, bouncing off of what you were just saying about how this is being seen as a crucial move to arrest the threat of these parties eating into the vote share, could you explain their significance when it comes to the vote share and explain how large this threat actually is? Well, Aisha, yes, this is primarily being seen as a major threat, because if you see the BRS, which is now launched by Telangana's Chief Minister, is being seen as a party that is being seen as an extremely aggressive party. In the last few months alone, we have seen that may it be the NCP, may it be the Congress, they have lost some of their topmost leaders in places like Pandharpur, Solapur to BRS. So this is being seen as an emerging threat by the Maratha strongman party, by the Congress as well. While if you see Vanchit Bahujan Aghadi, which is led by Prakash Ambedkar, we see that the entire vote bank that VBA enjoys is a fragmented vote bank, but it is a kind of a vote bank which decides in favor of any specific candidate, and that is why it is being seen as an important move to arrest the
progress of VBA as well in getting voices of OBCs, particularly the Dalits, primarily on their side, and that is why we are seeing that Maybe Shetkari Sangatna, Swabhimani Shetkari Sangatna, which is a prominent Absolutely. voice of farmers in western Maharashtra as well as in northern Maharashtra, is being seen as an important step. Back to you. All right, Vinaya, thank you so much for joining us and telling us more about that. With this, we're going to listen to some statements that have come in on the overall story. चोर नहीं है, सब चोर हैं। इसको जनता ने साबित कर दिया, केंद्र में कोई सब चोर हैं। ये जो इंडिया है ये यूपीए की कब्रिस्तान है और ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं इकट्ठा होकर कि किसी के अंदर ताकत नहीं है मोदी से लड़ने का। कहाँ जाएंगे लोग, किसी अगुवाई में जाएंगे, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? इसके हम लोग कोई नेतृत्व नहीं है। इनके जितने भी दल बने हैं, जो दल आए हैं, वो सब कांग्रेस के सताए गए लोग हैं। चाहे जेडीयू बना हो, चाहे ममता बनर्जी बनी हो, चाहे कोई भी दल हो प्रदेश का, कि ये सब लोग खाली अपने लिए काम कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं और मोदी से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। The solar corona and much more observation. कुमार कहते हैं हम महत्वाकांक्षी नहीं है। पॉलिटिक्स की बात सदा नेगेटिव अफर्मेटिव होती है और एक तबके की बात जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो उसी ये न में हाँ है। ये ऐसा है कि ये जो इंडिया अलायंस है, जिसको हम इंडिया कहते हैं, जो भारत का प्रतिबिंब है, जो इस देश के हर कोने, इस देश की हर आवाज, इस देश की हर आकांक्षा का प्रतिबिंब है, वो उन लोगों ने साथ मिलकर आकर बनाया है जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जिनको इस देश के संविधान को हर हालत में बचाना है। इंडिया एलाइज जो हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो एक साथ खड़े हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की आवाज बनने के लिए, हमें यह बिल्कुल तय करना है कि क्या हम एक दूसरे की काट करेंगे या हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। क्या हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं या हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। और अगर कहीं पर भी जरा सा संशय है तो उस बारे में चर्चा भी होनी चाहिए, उस बारे में बात भी होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारी पार्टी का या इंडिया अलायंस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो भी इस बात पर बैठकर चर्चा जरूर करेंगे। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर लें। नीतीश कुमार जी का यह वक्तव्य है कि वो किसी पद के इच्छुक नहीं है। अब वो लोग पहले भी कह चुके हैं कि वो न प्रधानमंत्री पद के इच्छुक हैं, न किसी और पद के इच्छुक हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। उनका केंद्र सरकार में अटल जी के मंत्रिमंडल में 5-6 विभाग संभालने का उनका योग्यता रही, अनुभव रहा है और पिछले 16-17 वर्षों से बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। वो जयप्रकाश जी के लोहिया के सिपाही रहे हैं, आपातकाल में उन्होंने 19 महीने जेल में गुजारे हैं। लिहाजा वो किसी भी बड़े से बड़े पद के लिए योग्य हैं।